Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to revise all VSIQs which are important for your examination. So I am starting from the chapter number third chapter chemical bonding से जो VSIQs आ रहे हैं, जब जब chemical bonding से VSIQs पूछ रहा तो वो कौन सा VSIQs आ सकते हैं chemical bonding से, उसके बाद फिर states of matter से, उसके बाद stoichiometry से, chapter wise मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ. Today I am going to explain the all VSIQs which are important for your examination point of view. ये VSIQs में से एटलीस्ट 5 to 6 VSIQs आपको मिलते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर एटलीस्ट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 6 VSIQs. अबव मोर देन 5 बोल सकते हैं, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकते हैं, पूरे के पूरे भी आ सकते हैं, मगर इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए आप. First question, how many pi bonds, sigma comma pi bonds are present in how many sigma comma pi bonds are present in C2H2 comma C2H4. इथिलीन है, एसिटिलीन है, ये दो. तो देखिए बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पहले हाइड्रोजन्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स. C2H2 ले लिया मैं, हाइड्रोजन के कौन से बॉन्ड्स रहते, कभी भी सिग्मा बॉन्ड्स रहते. तो फिर देखिए कार्बन कार्बन लिख लीजिए आप. तो एक एक कार्बन से C2H2 है ना, ठीक है, C2H2. यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल लेंगे, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन डाल लेंगे. देयर आर 2 हाइड्रोजन्स आर देयर, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म. फिर उसके बाद में हर एलिमेंट के बीच में जो पहला बॉन्ड आता वो सिग्मा बॉन्ड होता. तो ये पूरे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड्स. कभी भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर दे दिया तो कितने हाइड्रोजन है काउंट करो, उसके साथ में और एक सिग्मा बॉन्ड ऐड करो, तो 2 प्लस और एक ऐड करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते. टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, 4. तो आप क्या करो, और 2 बॉन्ड्स डालो. एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड 3. देखिए, तो टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ दिस वी हैव टू राइट दी अनदर 2 bonds. So then these additional bonds are formed or the pi bonds. In this C2H2, how many pi bonds are present? 2 pi bonds are present and there are 2 sigma bonds are present. Okay, once again I am writing clearly. C, अब देखिए इस तरीके से लिखिए, हाइड्रोजन ये C लिख लो जी, और ये हाइड्रोजन लिखिए आप, और ये एलिमेंट और एक एक एलिमेंट कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड. ऑल दीज आर द सिग्मा बॉन्ड्स. Now to satisfy the valency of the carbon, you are adding this extra bonds. So these are the pi bonds. 1, 2, 3. 3 sigma bonds are present and 2 pi bonds are present in this. This is about the first molecule C2H2. Now then C2H4. आप बोलिए मैं तो C2H4 में कितने हाइड्रोजन है, 4. क्या करना, प्लस 1 ऐड करना, 5 सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं. फिर देखिए इन द C2H4 हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर. कार्बन लिखा भाई मैं, फिर और एक एक कार्बन लिखा और एक एक हाइड्रोजन लिखा. ओके, C2H4 है, तो इसीलिए इस तरीके से जब मैं और ये एलिमेंट और एक एक कार्बन के बीच में between the 2 carbons, first I am writing the sigma bond. To satisfy the valency you have to write another bond on between this carbon and carbon. So you count how many sigma bonds are there, 1, 2, 3. कौन सा भी जो पहला बॉन्ड आता है एलिमेंट्स के बीच में वो सिग्मा बॉन्ड है. ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 sigma bonds are formed and 1 pi bond is present in this molecule. 5 sigma and 1 pi bond is present in the C2H4. इथिलीन में 5 sigma और 1 pi bond है. So this is about the first question. चलिए second question. Among Ca plus 2, Zn plus 2, which is the stable one and why? Ca plus 2 is stable one because it gets the noble gas configuration. Okay, it gets the noble gas configuration and it gets the pseudo noble gas configuration. Pseudo noble gas configuration मतलब D10 configuration आ रहा, तो d ऑर्बिटल आ रहा, D10 configuration आ रहा है ns के साथ में, तो उसको pseudo noble gas configuration बोलते हैं. So among the Ca plus 2, Zn plus 2, Ca plus 2 is stable
because Ca plus 2 gets noble gas configuration and Zn plus 2 gets the pseudo noble gas configuration. So this is the one question. Another one, why Ar does not forms Ar2? Already it is stable now. So already it is having 8 electrons in the last shell. Therefore, it does not form the Ar2. So these are the important questions which are there in the chemical bonding. जैसे पहले पूछ रहा था एग्जाम में वो questions मैं यहाँ लिखा. So the next chapter that is from the states of matter. States of matters में कौन सा question ज़्यादा पूछ रहा? In the states of matter, these are the three important questions. 3 or 4 important questions are there. First one, among N2, H2 and H2 नहीं है, O2 है, CH4. Among these three gases, which diffuses fastly, and why? What is the reason? You have to mention. Okay, I am explaining the answer. Among these three, CH4 gas is diffuses fastly. CH4 gas is diffuses fastly than which gases? N2, O2. Because CH4 molecular weight is how much? 12 plus 4, 16. Carbon का 12 है, 4 hydrogens है. 12 plus 16. Its molecular weight is 16. N2 weight is 14 plus 14, 28. O2 weight is 16 plus 16, 32. According to the Gram's law, the gas with lower molecular weight, less molecular weight is diffuses faster than the other. Here, methane is having 6 molecular weight, its molecular weight is 16, therefore it diffuses fastly than the gases which are having higher molecular weights. N2 28 है, O2 का 32 grams है, ये CH4 का 16 है molecular weight, तो जिसका molecular weight कम है वो जल्दी diffuse होता बोल रहे हैं. So this is about the one important question. Second one, what is the Boltzmann constant? What is the Boltzmann constant? Just write its values. Write its value. तो ये बोल्टमैन कांस्टेंट क्या है भाई? गैस कांस्टेंट पर सिंगल मॉलिक्यूल. गैस कांस्टेंट पर सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज गैस कांस्टेंट पर सिंगल मॉलिक्यूल. और गैस कांस्टेंट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल is called Boltzmann constant. That is written with the K. Its value is 1.38 into 10 to the power of minus 16 ergs. Okay, this is about the Boltzmann constant value. This is another important question. What is the Boltzmann constant? Write its value. बोलकर पूछ रहा है. Now next another one. इस चैप्टर से और एक important question है. कौन सा है भाई? How many times CH4 diffuses fastly than which gas? SO2. How many times CH4 diffuses fastly than SO2? For that we are using this formula, that is R1 by R2 is equal to under root M2 by M1. This is the formula. Here I am taking the R1 as CH3, CH4 or CH4 methane gas to R1 लिया. R2 is the rate of the diffusion of SO2 is equal to under root molecular weight of the SO2. What is the molecular weight of the SO2? 64 by molecular weight of the first gas, that is the methane. 64 by 16. 16 4 64 आता. root 4 की वैल्यू कितनी है भाई? 2 times. 2 times methane diffuses fastly than that of the sulfur dioxide gas. So this is another important question in this chapter. Now then fourth question ये chapter से और एक जो important है वो calculate the kinetic energy of 5 moles of N2 at 27 degrees C. Okay.
For this calculation, answer is kinetic energy is equal to 3 by 2 nRT. ये फॉर्मूला यूज कर लेना, where n is the mole numbers and r is the gas constant. अगर कुछ भी नहीं दे दिया तो आप डायरेक्ट कैलोरीज में लिख सकते हैं, 1.98 कैलोरीज दैट इज इक्वल टू 2 है। टेम्परेचर जो सेल्सियस में दिया तो इसको जो है डिग्री सी में दिया तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। 27 को क्या मिलाना भाई, 273 मिलाना, दैट इज कन्वर्टेड टू 300 के, ऐसा के बन जाता, वो सी जाके के बन जाता। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 by 2, n value is 5, gas constant in calories 2 and temperature is 300। ओके, तो ये कट हो गया भाई, ये कट हो गया। 5 is 15, 15 तो is 45, 4500 calories। ओके, ये हो गया भाई। दिस इज अबाउट द kinetic energy of 5 moles of N2 at 27 degrees C। So these are the important questions। ये questions ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, तो ये states of matter के questions हैं। उसके बाद स्टैक्योमेट्री के भी ऐसे क्वेश्चन में देखिए 1:4 रेशियो में दे रहा हूँ, हर एक चैप्टर से 4-4 दे रहा हूँ मैं, 4-4 रेशियो में दे रहा हूँ हर चैप्टर से मैं। तो स्टैक्योमेट्री के 4 भी ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो स्टैक्योमेट्री में फर्स्ट वाला, व्हाट इज द फर्स्ट वन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ glucose is present in 540 grams, 540 grams of glucose। 540 ग्राम्स में कितने मोल्स है कैलकुलेट करो बोल रहा। To calculate the number of moles, n is equal to weight of the given substance over gram molecular weight। Weight by gram molecular weight कर लिए तो you will get the number of moles। Then n is equal to what is the weight given, 540। Now molecular weight of the glucose that is C6H12O6। तो 6 इंटू क्या करना भाई 12, चलो 12 इंटू एक हाइड्रोजन वेट 1 है, 6 इंटू फिर क्या करना है ईच ऑक्सीजन का 16 है, ये टोटल करे तो आपको 180 आता, करके देख लीजिए आप, तो ये 18 3 हो जाता है। तो n is equal to 3, there are 3 moles of glucose present in 540 grams। This is the one important question in the stoichiometry। stoichiometry का important question है ये। Now next second important, in each chapter I am giving 4 or 5 questions। थर्ड चैप्टर से शुरू करा मैं, थर्ड चैप्टर के 3 क्वेश्चंस दिया आपके, फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर के थोड़े क्वेश्चंस दिया 4, और ये जो है फिफ्थ चैप्टर स्टैक्योमेट्री के क्वेश्चंस है। सो इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 540 grams of glucose। द नेक्स्ट वन, सेकंड वन, कैलकुलेट the weight of 0.1 mole of sodium carbonate। तो 0.1 मोल दिया, वेट मालूम करो बोल रहा, तो वंस अगेन सेम फॉर्मूला, n is equal to weight by ग्राम molecular weight। now then फिर उसके बाद वेट को कैलकुलेट करो बोल रहा भाई, वेट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम molecular weight हो जाएगा ये। तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.1 into molecular weight of the sodium carbonate is once again 2 into एक सोडियम का वेट 23 है, ये कर लीजिए, और एक कार्बन है 1 into 12, ये 12 आ गया, और ये 3 ऑक्सीजन है 3 into 16 करिए, ओके टोटल करिए, यू विल गेट दी 106। और देन 0.1 into 106 मल्टीप्लाई करके देखे तो आपको क्या आएगा, आपको 10.6 आएगा। So this is the weight of the 0.1 mole sodium carbonate। This is the second one। And third question, इसमें से थर्ड क्वेश्चन देखिए,
मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कैलकुलेशन है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला of the compound, of the compound, of the compound is CH2O. That is given in our question. Empirical formula is given. Its molecular weight is 90. Continuation. Calculate molecular formula कैलकुलेट करो बोल रहे। तो हाँ ऐसा दिया तो क्या करना भाई, ये फॉर्मूला लेना है। कौन सा फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम द एम्पेरिकल फॉर्मूला। वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू द एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। ये है एन, कहाँ से आएगा? ये एन फैक्टर कहाँ से आएगा? सो गिवन वेट, यहाँ पे क्वेश्चन में जो वेट दिया दैट इज डिवाइडेड विद द एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट देखिए, कार्बन का वेट 12 है, 2 हाइड्रोजन है वेट 2, ऑक्सीजन का वेट 16 है, 6 7 8 9 10 हो गया, ये 30 आ गया। ये कट कर लिए तो वैल्यू 3 आ गई। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट इज गिवन CH2O, and what is the n value? 3. By multiplying this with the n value, you will get the C3H6O3. This is the molecular formula of that compound. So this is about the another important question. और एक जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, what is the disproportionation reaction? disproportionation reaction। ओके, एक एग्जांपल लिख के समझा रहा हूं मैं। Cl2 रिएक्शन है, Cl2 plus 6 NaOH, ओके, गिव्स राइज टू 6 में से 5 क्या बन रहे हैं भाई? Cl से NaCl बन गए, और एक जो NaClO3 बन गया, और ये 3H2O। दिस इज द टोटल रिएक्शन among the 6 chlorine atoms। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्लोरीन एटम इन दिस मॉलिक्यूल, Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहता, और यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया। 0 से -1 हुआ, इसको बोलते हैं रिडक्शन। और यहाँ पे 0 था, 0 से यहाँ पे क्या हुआ भाई? +5 हुआ, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। So similar type of the element undergoes both oxidation and reduction simultaneously. Such type of the reactions are called as redox reactions here. Such type of the redox reactions are called as disproportionation reactions. Similar type of the element undergoes both oxidation as well as reduction. These type of the reactions, these type of the redox reactions are called as disproportionation reactions. नेक्स्ट इसके अंदर और एक छोटा क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऐसा K2MnO4 ऐसा दे देता आपको। तो 1-2 मैं समझा रहा हूँ मैं और H2SO4 ऐसा दे दिया। समझो क्या है भाई, कैसा कैलकुलेट करना, एक बार रिवीजन कर ले रहा हूँ। देखिए आप, पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है, सो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 1 लेना, +1 ले लिए, 2 रहने से 2 × +1, और जिसका कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ दैट कैन बी टेकन एज x। नाउ 4 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ईच ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीजन को कभी भी -2 लेना है, एक्सेप्शंस है 1-2, मगर जनरली -2 लेना है, दैट इज इक्वल टू 0। टोटल चार्ज नहीं है तो 0 लिखना। सिंप्लीफाई दिस, 2 + x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, इसको भेजा दिए तो प्लस होता, और ये प्लस वाला उधर जाके माइनस हो रहा, तो विल गेट दी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन द K2MnO4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द Mn इज +6। इन द H2SO4 आल्सो यू सी दिस, H2SO4 में सल्फर को अंडरलाइन कर रहा, आपको एग्जाम में अंडरलाइन करके देता, तो आप जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना रहता। So 2 hydrogens, hydrogen is also first group element. Generally hydrogen oxidation state is +1 only.
2 into plus 1 plus sulfur, that can be taken as x, and once again 4 minus 2 is equal to 0. अब जो जैसा करा मैं वैसी है, x is equal to क्या था 8 minus 2 is equal to क्या आ रहा भैया 6 हो रहा है. So this is the oxidation state of the sulfur in the H2SO4. अभी थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको पैटर्न बता दिया, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करना, आप मटेरियल देख के प्रैक्टिस करिए. ये VSAQ में आ सकता, नहीं तो SAQ में भी आ सकता बेटा. 4 दे दिया तो SAQ, और 2 दे दिया, if 2 are asked, that will come in the VSAQs. If 4 compounds are given, now then that is the SAQ, वो SAQ में रहता है. Now then these are the important questions in the stoichiometry. After the stoichiometry, the next chapter is the thermodynamics. Thermodynamics के SAQs कौन से, SAQs नहीं VSAQs कौन से हैं. आज मैं VSAQs का रिवीजन करा रहा हूँ. In the thermodynamics, first one in this, जो पहला है thermodynamic laws है, thermodynamic laws. Either second law ज्यादा नहीं पूछ रहा, third law ज्यादा पूछ रहा. First law and third law. What is the first law? Thermodynamic first law. It is the nothing but the law of conservation of energy. Energy neither be created nor can be destroyed. One form of the energy is converted into the another form. That is the thermodynamic first law. Okay, now next, what is the thermodynamic second law? All the natural processes are irreversible, okay, and spontaneous. So 3-4 definitions है, एक ही definition लिखना है आपको. Now then another one, thermodynamic third law है. What is the third law? Entropy of, ये अच्छा नोट करिए, entropy of perfectly pure crystalline solid at absolute temperature is equal to what? Is equal to 0. Entropy means randomness of pure perfect crystalline solid at absolute temperature is equal to 0. ये थर्मोडायनामिक के लॉस है बेटा. इससे क्वेश्चन पूछता हूँ. सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर, व्हाट आर इंटेंसिव कमा एक्सटेंसिव, कौन सा भी एक पूछ सकता, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ओके, इंटेंसिव, certain properties which are depends upon the nature of the matter present in the system. For example, water ले लिया, it boils at 100. यहाँ पे केरोसिन या बेंजीन ले लिया तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट अलग रहती. So certain properties which are depends upon the nature of the substance present in the system, not depends upon the quantity. Those properties which are depends upon the nature but not depends on the quantity of the matter are called as intensive properties. Certain properties like the pressure, internal energy, enthalpy, all these are depends upon what? Quantity of the matter. कम लिए तो कम रहता, ज़्यादा लिए तो ज़्यादा रहती है properties. Those are called as extensive properties. Certain properties which are depends upon the quantity of the matter present in the system. Those properties which are depends upon the quantity of the matter but not on the nature of the matter. Such properties are called as extensive properties. या और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स से. नेक्स्ट, व्हाट इज द एंट्रोपी वगैरह, ये डेफिनेशंस पूछ रहा, और हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, ये डेफिनेशंस पूछता है. व्हाट इज द एंट्रोपी? दिस इज द मेजर ऑफ द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम. एंट्रोपी is the measure of disorderness of the system. It is the measure of the disorderness of the system. For example, gases है समझिए, मॉलिक्यूल दूर दूर रहते, लिक्विड्स है मॉलिक्यूल्स करीब रहते, सॉलिड्स है
एटम्स या मॉलिक्यूल्स करीब करीब रहते हैं, इसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, तो एंट्रोपी ऑफ द गैसेस इज मोर एंड एंट्रोपी ऑफ द सॉलिड्स इज लेस. Okay, that is called as entropy. Entropy means disorderness of the system is called as entropy. इसमें और एक एक जो डेफिनेशन है, व्हाट इज द हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलता, नहीं तो फिर न्यूट्रलाइजेशन बोलता, हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलता. खाली फॉर्मेशन क्या है उसको क्या करना, 1 मोल लगाना. फॉर एग्जांपल द अमाउंट ऑफ द अमाउंट की जगह द अमाउंट, ओके, द अमाउंट ऑफ द हीट फॉर्म्ड, द अमाउंट ऑफ द हीट लिबरेटेड और absorbed during the formation of the 1 mole of the compound from its constituent elements. उसके constituent element से 1 mole compound form हो रहा, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही, वट एवर इट मे बी, दैट इज कॉल्ड एज energy released or absorbed during the formation of the 1 mole of the compound from its constituent elements is called as heat of formation. Okay, or enthalpy of formation बोलते हैं. What is the enthalpy of combustion? Okay, combustion किसको बोलते हैं? 1 mole compound to completely burnt in the air. We are heating the 1 mole of the compound in the air. As a result, how much energy is released? That is called as the heat of combustion बोल के बुला रहे हैं. Heat of formation बोला, heat of combustion बोला, और heat of neutralization. The amount of the energy released when 1 gram equivalent of acid combines with the 1 gram equivalent of base is called as heat of neutralization. Like that only some definitions are there in which I was explained 2 or 3 definitions. Those are important. So these are the important questions in the thermodynamics. Thermodynamics से ये questions पूछ रहा है BSA के उसमें. Now next, after this, which one, that is the acids and base and equilibrium, chemical equilibrium and acids and bases, chemical equilibrium and acids and bases. इसमें से जो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन है भाई? राइट द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. Kc Kp का रिलेशनशिप लिखो बोल रहा, तो इक्वेशन देता N2 + 3H2 रिवर्सेबल 1 2 NH3. ओके, तो इसके अंदर Kp Kc रिलेशनशिप मालूम करो बोला, तो क्या करना भाई? पहले क्लियर से फॉर्मूला लिख लेना, Kp = Kc RT पावर डेल्टा n, ये लिख लेना है. तो फिर उसके बाद डेल्टा n = LHS. लेफ्ट हैंड साइड में पहले RHS में कितने हैं वो मॉलिक्यूल्स लिखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के मोल्स RHS माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कर लेना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं भाई? 2. मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं? 3 + 1 4. सो 2 - 4, डेल्टा n = -2. If the delta n value is -2, now then Kp = Kc RT पावर -2. तो अगर यह माइनस में आया तो Kp तो कम रहता, Kc ज्यादा रहता. Kp is lesser than Kc. इस तरीके से ये Kp Kc रिलेशनशिप पूछ रहा है. The second question, what is the homogeneous and heterogeneous equilibria? Homogeneous and heterogeneous equilibria. CaCO3 upon heating of this limestone, CaO quicklime, CO2, it is released. Now then see that physical state of this is the solid है. Quicklime is also solid, limestone, quicklime, and carbon dioxide is gas. If the physical state of reactants and products are different, that is called as, that equilibria is called as heterogeneous equilibria. What is the homogeneous equilibria? If the physical states of the reactants and products, N2 is gas, H2 is gas, reversible one, 2NH3,
it is the gas. If the physical state of the reactants and products are same, that equilibrium is called as homogeneous equilibrium. ज़्यादा ये केमिकल इक्विलिब्रियम से यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. व्हाट इज होमोजेनस, व्हाट इज द हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम. तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट, ये भी पूछ सकता. इक्विलिब्रियम स्टेट बोले तो द स्टेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच velocity of the forward reaction is equal to the velocity of the backward reaction. At that state there is a no change in the concentration of reactant and products. That is, the state is called as equilibrium state, because it is also called as the dynamic equilibrium, because both reactions are taking place simultaneously. Therefore that is also called as dynamic equilibrium. So these are the questions in the chemical equilibria and in the acids and bases. यही chapter में है acids and bases. ज़्यादा क्या पूछ रहा मालूम है, Bronsted acid क्या है, what is the Bronsted base, Bronsted base क्या है, और conjugate acid base pair, acid base pair, conjugate acid base pair, या नहीं तो ionic product of water, ionic product of water, ionic product of water. ये questions repeatedly बार बार पूछ रहा. These are the some questions which are asking in the examination. They are repeatedly asking. Which are those? First one, Bronsted acid. Bronsted acid means, you know that in the Lowry and Bronsted theory, the reference is what? A proton. Substance which are able to donate the protons are called as proton donors. Proton donors are known as acids. Example, HCl H2SO4. ये एक है. ब्रॉन्स्टेड और लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड भी बोल सकते हैं, ब्रॉन्स्टेड बोल के भी बुलाते कभी. तो एग्जाम में ब्रॉन्स्टेड ही बोल रहा. ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है लिखो बोले तो कंफ्यूज नहीं होना. लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है ये. तो सब्सटेंसेस विच आर एबल टू एक्सेप्ट दी प्रोटॉन्स, H+ को एक्सेप्ट करने वाले, द सब्सटेंसेस विच आर एबल टू एक्सेप्ट दी प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एज बेसिस. एग्जाम्पल H2O, it accepts the proton and forms the H3O plus. And another one is the NH3 ammonia. It is also able to accept the proton. This is the Bronsted base. Conjugate acid base pair. देखिए HCl से एक प्रोटॉन कम करा, Cl माइनस लिखा. H2O से एक प्रोटॉन कम करा, OH माइनस लिखा. तो ये दो पेयर्स है, ये जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं और एसिड बोलते हैं. और इसके साथ में जो है ये इसका बेस है. एसिड बेस पेयर विच इज डिफर विद द सिंगल प्रोटॉन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. Cl माइनस का एसिड क्या है बोले तो ये लिखना. H2O है ना, इसका बेस क्या है बोले तो ये लिखना. OH माइनस का एसिड ये है और इसका बेस है. ये दो के पेयर्स के बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है. that is called as conjugate acid base pair. The next one is ionic product of water. When water is dissociated, that gives the two ions. First one is the H+ and OH minus ions. H+ ion combines with the H2O and forms the H3O plus. Whatever it may be, the product of the concentration of H+ or H3O plus ऐसा भी लिख सकते. And OH minus ions is called as ionic product of water. Product of the concentration of H3O plus and OH minus ions is called as ionic product of water. The Kw value at the room temperature is 1.0 into 10 to the power of 14 mole square by liter square. Mole square by liter square. This is the Kw value at room temperature. So this is about the ionic product of water. These are the some important questions in the chapter chemical equilibrium and acids and bases. And remaining जो chapters है उनके VSAQs next class में explain करते हैं. And उससे ये syllabus आपका total SAQs, VSAQs और LAQs complete होते हैं. Inshallah I will continue in next class. Assalamu alaikum.